हमें बस ये समझना है कि वो दे रहा है, बात खत्म। हो सकता है कि उसकी वाइफ से कोई प्रॉब्लम चल रही हो, अब उसमें हमको क्यों हो पड़ना। सकता है उसकी वाइफ डोमिनेटिंग हो। मे बी। जो कि 90% केसेस में होता है। तो आप उस पर कोई आर्ग्यू ना करें, क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर क्वेश्चन चेंज करिए सर, हार्ड लग रहा है बहुत। अरे ट्राई तो करो, शुरू तो करो। प्रॉब्लम होगी तो मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं जहाँ थोड़े ना रहा हूँ। इंट्रोड्यूस फॉर द कैपिटल। He commenced business on 1st April 2018 with a capital of rupees 10,000. He immediately bought furniture and fixture for rupees 2,000. On 1st October 2018, he borrowed rupees 5,000 from his wife at the rate 9% per annum interest not yet paid, and introduced further capital of his own amounting to rupees 1,500. He drew at the rate 300 per month at the end of each month for household expenses. On 31st March 2019, means on closing date, his position was as follows: cash in hand, sundry debtors, stock, bills receivable, sundry creditors, owning for rent, furniture and fixture, depreciate by 10%. Ascertain the profit or loss made by A during 2018-19. So it is very simple one. मुश्किल लग रहा थोड़ा सा। बहुत ज्यादा ही सिंपल है क्वेश्चन। सिंपल है। अच्छा। अम, एक अच्छी बात है कि कैपिटल बिगनिंग का अपने आप दे दिया है, निकालना भी नहीं है। सिर्फ क्लोजिंग का कैपिटल आपको निकालना है और फिर एडजस्टमेंट वाला पार्ट करना है प्रॉफिट में, प्रॉफिट कैलकुलेशन में। अच्छा। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और लाइक खाली एक ही बनाना है ना। यस। एंड ओके ठीक है। सो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो फिर ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, राइट। यस। सर ये जो नीचे इंफॉर्मेशन है, दिस इज लाइक फॉर लाइक द क्लोजिंग थिंग, राइट। यस। कैश इन हैंड्स एंड क्रेडिटर्स। ओके। तो मैं ये इंफॉर्मेशन को ले रहा हूँ एज क्लोजिंग It is स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। clearly written in the last line. On 31st March 2019, his position was as follows. So date is closing. It means हाँ the हाँ। items are also closing. सर बुखार नजला है सर। What? बाद में बताते हैं। Prepare the statement of affair first, closing one. मैं ये कह रहा था बुखार और नजला है। बुखार? बहुत स्लो हाँ बोल रहे हो। बुखार है, मतलब बुखार होता नहीं, नजला है। नजला क्या होता है फिर? यू डोंट नो नजला? मतलब लाइक आई हैव अ रनी नोज काइंड ऑफ थिंग। सर्दी है। हाँ सर्दी है, सर्दी। यू नो, मुझे थोड़ा शुद्ध हिंदी में बोलना पड़ता है। अब मैंने लिए है उर्दू, तो मुझे उतनी अच्छी आती नहीं, लेकिन जब तक था हिंदी तो टॉप करता था। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, चलेगा मेरे को। जी। कोल्ड है। नहीं पता नहीं, हिंदी में उर्दू में बात करने में एक अलग ही कंफर्टेबलनेस फील होता है, लाइक ऐसे तो इंग्लिश में भी मिलता बात जुलता कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं मिलता जुलता है दोनों। यहीं पे एक तरह से पैदा हुए हैं, तो मतलब भाषाएं है। एक तरह हाँ से हाँ। सेम आ जाती जी जी।
लेकिन अगर मैं प्योर उर्दू में बात करूंगा तो आपको मुश्किल होगा समझने में। हाँ, बहुत ज्यादा। हम्म, कुछ आपका Actually, आप the शुद्ध problem हिंदी is वाले। that you have studied Hindi also and Urdu as well. Means you studied Hindi, English, and Urdu, all three. But we never ये studied Urdu. So that या is या the आप लोग का सीबीएसई बोर्ड नहीं था ना? we हम्म। have studied in Bihar board first, and then when I studied in Delhi. After that, I have studied some part of CBSE class textbook and then the CA. अरे सीए तो भाई टॉप एकदम टॉप है। तो कहीं पे भी ऐसा हर जगह मतलब बिहारी घुसे हुए हैं। उर्दू का सीन होता नहीं है। हर जगह बिहारी लोग के लाइक भरे हुए हैं, हर जगह बिहारी घुसे हुए हैं। अब तो फिर भी कम हो गया है। पहले तो हर जगह सही में थे। एक बिहारी सब पे भारी है। ये सही है नहीं, बट बोलते हैं सब। तो आपको मालूम है ना, जिसने गूगल को हैक किया था 52 सेकंड्स के लिए वो बिहार का ही था। ये सब एक्चुअली आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट न्यूज। एग्जैक्ट नहीं है, वो कुछ गड़बड़ है न्यूज में। हाँ, चीजें हैं बहुत सारी जगह पे, जैसे कि the main area that we cover is government job, IAS, IPS, clerical level jobs in all the states. Government job is filled with, सर आईएएस आईपीएस बहुत हार्ड है, बाप रे। yes, so filled with Biharis. Due to Bihar people joining the other government post in other states, they started a new policy called domicile policy. Means 80 or 90% of this vacancy will be given to the local people, local students. So this domicile policy is started due to Bihari entry in different states. So हम्म। yes, you can say that actually in Bihar they don't want to start any business. They are not business minded people. They just want to join a government job where they can easily uh, do their job with a relaxed mind. Means there is no सही pressure. सही, बस गवर्नमेंट जॉब सरकारी जॉब मिल जाए, शादी हो जाए, बस खत्म। बस मामला खत्म। ऐसे ग्रोथ का कोई सोचता भी नहीं है। तो हाँ। वो एक इशू हो जाता है ना इस तरह से, फिर आपके एरिया में कोई बहुत ज्यादा कारखाने अच्छा सर, फैक्ट्रिया। बिहारी मैंने एक चीज नोटिस की है कंपेयर टू अदर उसमें जॉनर्स में, बिहारी सबसे ज्यादा बिहारी गानों और बिहारी मूवीज में इतनी वल्गैरिटी क्यों रहती एक्चुअली द प्रॉब्लम इज we uh, we have actually all the songs that become famous is vulgar type. Okay, but the original actual songs which is very good, uh, they don't become famous because the language is too hard to understand for है बीच? others. तो मतलब आसान भाषा जो गंदी तरह के होते हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। बट जो नॉर्मल गाने हैं, जो अच्छे गाने हैं, उनका भाषा थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है, तो वो फेमस हो ही नहीं पाता है। तो गाना कम ही है उस हम्म। तरह से, लेकिन बस फेमस वही हो गए हैं, तो सबको लगता है कि ठीक है, वल्गर गाने ही बनते हैं। हाँ, मूवीज जो इधर आके बनने शुरू हुए हैं वो थोड़ा गड़बड़ है। वो उसमें बहुत ज्यादा वल्गैरिटी है। वो ठीक है, हम्म। वो सब छोड़ते हैं, पहले सर आप तो क्वेश्चन। अच्छे ना। नहीं नहीं, वो एक्चुअली बातों को अलग घुमाइए मत, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हमको
कंप्लीट करना है सिलेबस, बहुत लेट हो चुका है, आपका दिसंबर चल रहा है। जी जी, फिर हम लोग का तो सिलेबस कब का हो गया स्कूल में, सारे सब्जेक्ट। वही वही मैं भी कह रहा हूँ कि स्कूल में कब का सिलेबस हो गया, यहाँ पे अभी तक बचा हुआ ओके, क्वेश्चन नंबर। है। आपको क्लास के बीच में ना इधर उधर की बातें करने में बहुत मजा आता है। आपको क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करना सर, या तो होमवर्क खाली करना। क्लास के वक्त नहीं सर, खाली क्लास के वक्त नहीं, किसी से भी कहीं पे भी, कुछ सर असल में मैं बोर होता हूँ यहाँ पे, कुछ मेरी बहन है वो इंडिया में चली गई है, तो यहाँ पे लिटरली मेरे पास कोई है ही नहीं, मॉम डैड के अलावा बस मैं ही अकेला हूँ घर पे। तो और मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट सर, तो मेरा सबसे मिलने में, बात करने में, बाहर जाने में दिल भी लगता है मेरा। अगर इंट्रोवर्ट होता तो घर पे बैठा रहता मैं, लेकिन हाँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ तो वही बात करने में अच्छा लगता है। बट ऐसे क्लास का टाइम वेस्ट करना भी तो सही नहीं है ना। नहीं नहीं सर, मैं कर रहा हूँ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर ऑफ, कौन बंदे का नाम क्या है, अच्छा ये सही। यहाँ पे भी सर एक दो दिन से बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ गई है, सुबह में 6-7 डिग्री चला जा रहा है, 5-6-9 डिग्री ऐसा चला जा रहा है सुबह सुबह हमारे इधर भी दिल्ली में तो कुछ ज्यादा ही है, में। यहाँ पे फिर भी कम है अरे हमारे इधर। दिल्ली की तो ठंडी बाप रे, आदमी एकदम, क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट के अंदर जकड़ा रहता है। हाँ, कह सकते हैं, ज्यादा ठंड होगी तो करना ही अरे पड़ता है। सर निकलने का मन ही नहीं करता, इतनी ठंडी रहती है। Okay, I so believe do it little fast so that we can discuss if there is any issue. कर, यस सर, यस सर, लाइबिलिटी अमाउंट, assets अमाउंट। 2800। तो ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, ये बोरो रुपीज 5000 फ्रॉम हिज वाइफ एट द रेट 9% पर annum, तो लेकिन ये जो नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई मैं खाली एज इट इज लिख रहा हूँ, तो कुछ इंक्लूड या कुछ क्या करना, कुछ करना है उसमें या नहीं। जो information, when we use any information for
calculation of capital, then we never adjust any additional items, like we don't do any adjustment in calculation of capital. So all the items which is already given in the table will be written in a statement of affair and nothing else. There is one Okay. item So what is written, this? Oh, is furniture and fixture depreciate by 10%. You have to exclude this also. अच्छा ये नहीं आएगा. हाँ, फर्नीचर एंड फिक्सचर का डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा. मैंने बोला ना कि अभी एडजस्टमेंट कोई भी नहीं आता है, सो वी विल नेवर राइट एडजस्टमेंट So इन खाली कैलकुलेशन. अच्छा. ओके. सो ये फर्नीचर एंड फिक्सचर का 2000 लिख दे हम लोग. ठीक है. नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ अगर जैसे क्वेश्चन में फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर 2000 लिखा हुआ है ना ही इमीडिएटली बॉट तो वो लिखूं या मैं इंक्लूड ही नहीं करूं. यस यस, इट विल बी रिटन, बिकॉज फर्नीचर एंड फिक्सचर जो हमने 2000 का खरीदा है वो तो आएगा ही, वो तो हमारा एसेट है. ओके. एंड दिस व्हाट इज योर ओइंग फॉर रेंट इज इट लाइक एन एसेट और क्रेडिट लाइक लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग रेंट. ओके. ओके आउटस्टैंडिंग बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सो यस लायबिलिटीज. यस, and loan of wife will be written also. Outstanding 150. 2000. So cash, sundry debtors, stock, bill receivable, furnitures, and fixtures. In total, this would be 3600. Wait, 6600. Then sir, मुझे asset side 17,000 आ रहा है and like total Asset side, how much? 17,000. 2,800 plus 4,800, 6,800, 1,600, and furniture and fixture 2,000. Okay. सही है. अभी बनाओ तो सही, सही गलत तो बाद में पता चलेगा. अरे सर आप ह्यूमन कैलकुलेटर है तो आप तो एक सेकंड में कर सकते हैं ना देखिए. कैलकुलेशन तो सही होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा ना मिस्टेक होता है, आइटम्स की मिस्टेक. Can write the items on the wrong side. So if that is correct, then yes, calculation will be okay. ओके. अच्छा. In the beginning, when I said that we have to study single entry system, then you said that there is no chapter like this. सर वही तो मैं कहता हूँ ना कि उसके टीएस अग्रवाल के हिसाब से मत बताया करिए प्लीज.
बहुत कंफ्यूजन होती है। वो अग्रवाल साहब बैठ के कुछ भी बना देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है हम लोग का एनसीईआरटी का है। ओके, 17,000 माइनस 16,300 okay sir, I got the closing capital as 16,350 16,350 16,350। ज्यादा नहीं आ गया? हाँ, I think that is not correct. क्योंकि सर हम लोग की लाइबिलिटीज में खाली दो ही चीज जाएगी ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड ओइंग फॉर रेंट। सो 17,000 माइनस 650 इज इक्वल्स टू 16,350। ये एक मिनट में ये वाली कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता हूँ जस्ट ऑलरेडी कि सही है या नहीं। एसेट साइड का टोटल 18,000 आया। 17 रुकिए एक सेकंड में फिर से चेक करता हूँ। 2,800 प्लस 4,800 प्लस 6,800 प्लस 1,600 प्लस, ओ हाँ, ओके ओके, 18,000 है। 1,000 छूट गया मेरा। वही तो मैं सोचूं, तभी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए मैं पूछ रहा था। ओके, 18,000 माइनस 650। हाँ वही बस 6 और 7 का फर्क था। 17,350। Okay. Now the next part. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट राइट। So how much you got your closing capital? 17,350। But it should be on the liability side. What are the items you have written? Sundry creditors and this one, owing for rent. And what about wife's loan? 5,000. Oh, okay, 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 okay. I told हाँ you this in the जी beginning that you have to write wife's loan also in the liability side. सर, भैया वही वाइफ परेशान कर रही है यार, उसको छोड़िए। वाइफ को भला इंटरेस्ट कौन देते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार। You have to consider wife's loan always. हाँ, लोन तो ठीक है, मैं तो चलो अभी लूंगा कल वापस कर दूंगा, इंटरेस्ट कौन देते हैं भाई? अपने घर में जब ये चलेगा तो फिर। But you are not calculating, you are not writing interest right now. ये ओके, बगल में सो खाली 5,000 लिख दूं मैं? कोई नॉइज तो नहीं आ रहा ना अभी? एक्चुअली बगल में डॉग फाइट शुरू हो गई है। क्या शुरू हो गई? डॉग फाइट। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, आवाज नहीं आ रही है, सही है। परेशान कर रखा है कुछ। कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है आसपास। फिर भगा दीजिए, ये तो पर खाना दे दीजिए, आई गेस चुप हो जाएगी। in actually village area, it cannot be controlled, so that is an issue. ओके। We just beat them. Okay, so how much you got now? तो लोन पे अभी मैं इंटरेस्ट नहीं डालूं ना उसमें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में? No adjustment is required.
right now. Okay. So 5,000. Okay. Uh, so 18,000 minus 5,650. So it'll be 18 minus 5 is equals to 13. 13 minus 600, it will be 12,000. 12,350. Yes, it is your closing capital. Okay. Okay. Hey. 12,350. Now calculate the profit. नजला बहुत हो रहा है सर, बहुत ज्यादा नाक में रही है. Calculate the profit now. Yes, yes, yes. खड़ो खड़ो. सर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद एडजस्टमेंट करूंगा तो इट्स लाइक ओके राइट. Calculation of profit is done first, and after that, in that statement itself, you have to write adjustment after calculating profit. ओके ओके. सो क्लोजिंग कैपिटल आई गॉट 12,350. And then A drew 3,300 per month. So drawing will be post April 2018 से लेके 31st March 2019. So one question I have, Yes. like in the question it's written A drew rupees 300 per month at the end of each month for household expense. So from 1st April 2018 से अगर हम लोग काउंट करें till 31st March 2019, it will be 12 months, right? So क्या बोलते हैं, the amount will be 3,600, right? Yes. Okay, okay. Plus drawings. 3,600. 0, 9, 3 plus 2. And then minus opening capital. Opening capital कितना था, 10,000. Okay. Hmm, hmm.
minus 10,000. Ontario, profit. So अभी without adjustment profit आया मुझे 5,950. Okay, first of all, you have to write closing capital. You remember this? जी जी Closing capital is 12,350. Now you have to add drawing it. That is 3,600. जी ऐड किया फिर तो आया 15,950. Okay. And And then you then have to deduct additional capital and opening capital. okay 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 additional capital भूल गया मैं. Shit. Oh my god bro. This is gonna be tripping. So additional capital भी minus ही होगा so wait इसी में minus कर लेता हूँ. Additional. Okay. Minus 1,000. So Yes. so after additional capital and without adjustment I got the like this profit as 4,450. Okay. 4,450. अब आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आएगा वो मुझे नहीं मालूम. Now, what are the adjustment that is given in the question? He borrowed rupees 5,000. Sorry, he borrowed rupees 5,000 from his wife at 9% per annum. ये है and then furniture and fixtures depreciate by 10%. So Yeah. 2,000 depreciate 200 and Okay. इसका 5,000 का Depreciation is 9%. 200 and interest on loan. Interest on loan 5,000 का 9%. 10% तो कितना होता? 10% 500 5,000 होता. into 9%, it will be 450. हाँ okay 450. But we cannot take for 450 because loan was taken on 1st October 2018. So it is used only for 6 months. Yes. So we have to Wait calculate just for 6 months. It will be 450 divided by 2. It will be 225. wait 5,000 मैं करके देखता हूँ यहाँ पे 5,000 into 9 by 100 into 6 by 12. 50 into 9 it will be 450. 602. Okay. 450. then 900 आ रहा है ना? 900? नहीं 450 into 2. 5,000 into 9 by 100 into 6 by 12.
हाँ, तो मैंने 9/100 का 0 0 कट किया 100 का, एंड उसका 50 का 5000 का 2 2 0 कट किया। सो 50 into 9 into 6/12, 6 को 1 से कट किया और 12 को 2 से। सो वहां पे खाली 2 बचा ना। सो 50 into 9 450, एंड देन into 2 इज इक्वल्स टू 900। 900. 50 into 9, it will be 450. But on the upper side, it is 1 only. So why you are multiplying it with 2? नहीं, नीचे 2 है ना। अच्छा, Yes, ओके, इट बिकम्स हाफ। ओके ओके ओके। हाँ, ओके ओके, will be सॉरी like this: सर। 5000 into 9 by 100 into 6 by 12. So सॉरी you सॉरी remove सर। these two zero, it will be 225. यस यस यस। Now these two adjustments will be deducted from the final profit. ओके, सो फर्नीचर। तो सर मैं यहाँ पे अभी मतलब जैसे फर्नीचर और फिक्सचर का और ये इंटरेस्ट का मैं खाली मतलब कैलकुलेट करके नहीं लिख रहा हूँ, खाली डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ, लाइक आफ्टर एडजस्टमेंट। सो अगर एग्जाम में भी खाली डायरेक्ट अमाउंट लिखूँ मैं बिसाइड नहीं दीज तो थिंग्स, गड़बड़ सो हो इज इट जाएगा। ओके? अभी आपको लिखना कैसे है? यू हैव कैलकुलेटेड द प्रॉफिट। आफ्टर राइटिंग द प्रॉफिट you have to write, below that you have to write minus interest on loan, and then minus depreciation on furniture, and you have to write the amount of both of these two, and then deduct the amount from the profit you have calculated. ओके ओके ओके। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हम लोग का कितना है? 200, राइट? डेप्रिसिएशन, एंड देन this will be minus interest on loan 225. So in total it will be wait, 3, 4, 5 plus 2। सर मुझे आ रहा है 4025। 4025. यस सर। After this you have यहाँ to पे बाजू prepare में the फाइनल final प्रॉफिट balance लिखूंगा। sheet. व्हाट सर? After this you have to prepare final balance sheet. अरे बाप रे सर, अभी 10 मिनट बाकी, इतनी मेहनत ना कराएं। Okay, so in final balance sheet, you have to write everything same as the statement of affair you have prepared. Okay, ओके but there will be some changes. Now in this balance sheet, you have to do all the adjustment also. Like when you write furniture 2000, so you will write furniture 2000 in inner column and then minus depreciation 200, and you'll write after deducting, you'll write the amount in final column. Okay, so you have to do all the adjustment in this balance sheet. ओह Okay, माय गॉड। okay, so do it now. सर बैलेंस शीट को फॉर्मेट दिया आपने? बैलेंस शीट आपने बहुत बार बनाया है ना। आपने 12th में जो, सॉरी 11th में जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर बना है, उसमें फाइनल बैलेंस शीट नहीं बनाया आपने? बनाया तो अच्छा नहीं, मुझे लगा आपने ये चैप्टर में दिया होगा एक अलग से। नहीं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हर जगह सेम ही है। जब आप कंपनी में जाते हैं तो बस वो बदल जाता है, बाकी सब जगह सेम। ओके ओके। सर माय वीडियो वाज ऑन ऑल दिस टाइम? नो,
Were you able to see me? No. अच्छा, यहाँ पे मुझे अभी थोड़ी देर से दिखा रहा था ऑन, लाइक खुला हुआ था कैमरा। ओ माय गॉड। नहीं, वेट। कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी तो मैंने बंद किया। अब पहले। दिखाई दे रहे? हाँ, अभी दिख एक्चुअली अंधेरा सा दिख रहा है और कुछ नहीं। हाँ, वो मैंने थंब रखा हुआ है। अच्छा, अब कुछ दिख रहा है? मेरा हाथ दिख रहा है ना? हाँ, ओके। तो वीडियो ऑन करके क्लास में क्यों नहीं करते हो जब चला सकते हो तो? नहीं, मैंने आज तक नहीं किया। मैं करता नहीं हूँ बस। मोबाइल चलाना होता है क्या क्लास में? नहीं, ऐसा नहीं, फिर मैं like, थोड़ा शाइनेस रहती है, पता नहीं क्यों। मैंने टेंथ में भी लर्निवो पे था, तो मैं असल में किसी ने कोई कैमरा ऑन ही नहीं करता था ना। टेंथ में कोई कर रहा है ना, इलेवेंथ में ना मदिया करती है ना, मैं ना कशिका अम्मार, कोई नहीं करता है। तो मैंने कहा अच्छा। चलो मैं भी क्यों करूँ मुफ्त का। मुझे ज्यादा चेहरा दिखाने की आदत भी नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं तो करता। ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर स्टूडेंट वीडियो ऑफ करके ही रखते हैं। कुछ कुछ हैं जो ऑन करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, शरीफ बच्चे वही रखते होंगे। हम लोग तो नहीं रखते थे। Okay. So, have you prepared the format of balance sheet? बना ही रहा हूँ फिर। Do it, से अच्छा बच्चा होगा ना मैं। do it fast. जी जी, बना रहा हूँ बना रहा हूँ। एग्जाम्स खत्म होने के बाद शायद छुट्टी मिलती है। Yes. So statement of profit is like same like balance sheet, right? No. No, sorry, sorry. Statement of affair is same like balance sheet, right? Yes, most of the part. हाँ, मतलब assets जो statement of affair में डाले हैं मैंने अभी, वही same balance sheet में भी जाएंगे, right? और liabilities में भी वही चीजें जाएंगे, right? Yes, but अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो अभी कर देता हूँ मैं। चलो, बहरहाल सेम ही चीज डालनी है तो ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था उसमें। बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं बस, जल्दी ही। सर, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में क्या करना होता अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में क्या करना होता है? अभी प्रैक्टिकल ही तो कर रहे हो। है? नहीं नहीं, असल में मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम लोग का प्रैक्टिकल होने वाला है अभी। आज मेरा स्कूल नहीं था क्योंकि ना मेरा एग्जाम था और ना मेरा प्रैक्टिकल था। बट अभी परसों मेरा इंग्लिश और बिजनेस का प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स का भी जल्दी होने वाला है। तो मुझे समझ में नहीं आया अकाउंट्स में क्या प्रैक्टिकल होगा सर, वही मैं कंफ्यूज हूँ। अकाउंट्स में क्या प्रैक्टिकल होगा? तो वो आपको हाँ सिचुएशनल क्वेश्चन देंगे। एनी क्वेश्चन which is given as situation, like all the items will be given of any related business, and you have to prepare the this trial balance final account from that information. सारी चीजें, मतलब ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लेजर, सब कुछ। Yes, आपको सब कुछ बनाना पड़ सकता है। जर्नल, then ledger, then trial balance, then final account, and after that if anything other is required, then bank reconciliation, depreciation, all these. बाप रे।
क्योंकि मैं एक बार टीचर से भी अपनी कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि उनसे बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं सोचा आपसे पूछ लूं। हम्म, अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब सर मैं देख, लाइबिलिटीज में जो एडजस्टमेंट है, मैं खाली एडजस्टेड अमाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। वो ये करके नहीं कि अंदर अमाउंट करके फिर एडजस्ट करूँ मैं। तो एडजस्टेड अमाउंट टोटल लिख लूँ सीधा तो चलेगा ना? amount of wife's loan, how much? Amount of wife's loan is like this thing, right? 5,000 plus something. क्या था इंटरेस्ट? 250। 225. हाँ सॉरी, 225। सो 5,225। Yes. ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ इतने दकीका। And furniture will be 1800. Furniture will be, yes, furniture will be 1,800, 2,000 minus 200. And all other items will be same. Now, one thing that you have to do, let me explain that. Uh, Capital. You have to write the capital of the beginning. Capital of 10,000 will be written in inside column. Then you have to add additional capital, which is 1,500. So it will become 11,500. Then you have to minus closing, sorry, not closing, it will be drawing. Drawing will be deducted, it will be 3,600. So 7,900, and then plus profit that we have calculated. Profit is 4,025. So it will be 11,925. This is your capital part. अच्छा, बैलेंस Means शीट में ड्राइंग को माइनस किया जाता है, राइट? ओके। नहीं, बैलेंस शीट में नहीं, हमेशा जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें ड्राइंग माइनस होता है। जब whenever closing capital is given, then you have to add the drawing. Okay, so this one is opening ओके। capital. That's why we have to deduct drawing from it. So your capital will be this. ओके सर। सर आपको अमाउंट रब करना है तो रब करिए, लेकिन ये जो कैपिटल एडिशनल कैपिटल वो मत रब करिए। Yes. कैश। Done. वेट, नहीं मैं वो कर रहा हूँ ना अभी। बैलेंस शीट बना ही रहा हूँ मैं। और जल्दी कीजिए, तो दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। हाँ बस 2-3 मिनट। 1,800 माइनस। Done. सर बस हो गया, बस 2 मिनट देते 2 मिनट।
Okay, match the item. You can calculate the total later. I'm telling you the item name. Cash in hand 2,800, sundry debtors 4,800, stock 6,800, bills receivable 1,600, and furniture 1,800. Correct. On the liability side, there is sundry creditors 500, owing for rent 150, and then loan from wife it is 5,225. Yes. And capital I have Loan. already written here.